Hello friends, welcome back. Welcome to my channel. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial and other legal exams. And if you have seen my previous video, at the moment we are doing the series of Uttarakhand Judicial Services. In today's video we are going to discuss the Uttarakhand Judicial Services का प्री का 2015 का पेपर. बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि यहाँ पर उनको क्वालिटी डिस्कशन के साथ सारे पेपर सोल्व मिल सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर. देखिए मेरे पास ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है. आप इसको यूकेपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये. सो फर्स्टली लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 1, दैट इज जीके 50 क्वेश्चंस अगेन. Question number 1 is who can expel a state from membership of United Nations? General Assembly, Security Council या फिर General Assembly upon recommendation of Security Council या General Assembly upon recommendation of Secretary General. इसका आंसर क्या रहेगा? General Assembly upon recommendation of the Security Council. C is the answer. And where it is mentioned? It is mentioned in Article 6 of UN Charter. Alright. Next question number 2. In which case it was decided that foreign sovereign living in England incognito is entitled to claim sovereign immunity in court? It was Miguel versus Sultan of Johor. A is the answer. Next question number 3. In which case Supreme Court has held that enactment including Schedule 9 of the Constitution of India are subject to judicial review? It was I.R. Kolo versus State of Tamil Nadu. C is the answer. Next question number 4. Which article of UN Charter confirms the view of Oppenheim and Stark that UN Charter has not completely abolished the law of neutrality? देखिए न्यूट्रलिटी पूछिए कहाँ पर है, आर्टिकल 48 and 50 में. बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन अफर्म्ड स्टार्क व्यू दैट सोवरेनिटी इज नाउ कंसिडर्ड एंड एक्सेप्टेड एज बोथ डिविजिबल एंड लिमिटेबल? इट वाज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कुमार सेन गुप्ता. बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द प्रिंसिपल ऑफ Rebus Sixtanti Busconnots avoidance or termination of treaty due to fundamental changes in circumstances. D is the answer. Next is 7. United Nations has recently proclaimed the following as International Yoga Day, 21st June. A is the answer. Next question number 8. The Constitution 100th Amendment Act 2015 relates to will it full enforcement of the original land boundary agreement between India and Bangladesh, authorize enforcement of revised version of land boundary agreement between India and Bangladesh. Was revised version. B is the answer. देखिए लास्ट क्वेश्चन जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं सब में जो है ये जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है वो आई हुई हैं, वो पूछ रहे हैं. तो लास्ट पेपर में हमने डिस्कस किया था. देखिए अभी जो रिसेंट आई है 105th अमेंडमेंट आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 18th अगस्त 2021 में. इसमें कि अमेंड किया गया है आर्टिकल 342A एंड 366 का 26C, जिसमें कि सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन दी गई थी. ठीक है. और 342 में उसका कमीशन बनाया गया था जो कि आया था 102nd अमेंडमेंट से, जिसमें कि इंसर्ट किए गए 342A एंड 366 का 26C. और कौन सा आर्टिकल इसमें इंसर्ट हुआ था? 338B, दैट इज कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी. एंड व्हाट अबाउट 104th अमेंडमेंट एक्ट? इसमें जो है लोकसभा में SC/ST की सीट्स को जो है 10 ईयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया. एंड एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स थी उसको जो है एबोलिश कर दिया. देयर आर 2 सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन रिजर्व्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. वो अब एबोलिश कर दिया गया है. अब ये विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है? विद इफेक्ट फ्रॉम 21 जनवरी 2020. ऑलराइट. बीच में रह गई कौन सी? 103. 103rd अमेंडमेंट से क्या हुआ था? ये भी विद इफेक्ट फ्रॉम है 12 जनवरी 2019. इसमें जो है आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) जो है इंसर्ट किए गए थे, जिसमें कि स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के EWS के जो कोटा बनाया गया था यहाँ पर बनाया गया था. ऑलराइट. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Who among the following was not a judge in International Court of Justice? M. Hidayatullah. D is the answer. ये सभी जो हैं जज रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. In which of the following cases did the National Human Rights Commission file a petition in Supreme Court of India? तो वो था बेस्ट बेकरी केस. C is the answer. इसका नाम क्या था?
Zahira Hasibullah Sheikh versus State of Gujarat. Next question number 11. In which of the following cases the Constitutional Bench of Supreme Court has by 4-1 majority held that review petition relating to capital punishment shall be heard in open court? It was Muhammad Arif versus Registrar Supreme Court. B is the answer. मनोज नुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस पे था? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट. कभी आ जाए. ओके. Next is 12. Which of the following languages has been recognized as second official language of Uttar Pradesh and held to be so by Constitutional Bench decision of Supreme Court? That is Urdu. D is the answer. ये केस कौन सा था? ये था उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन versus State of UP 2014. Okay. Next is question number 13. Which one of the following has recently been declared to be unconstitutional by the Supreme Court of India? National Tax Tribunal. A is the answer. Because National Tax Tribunal Act encroaches upon the exclusive domain of other courts and tribunals. A इसका आंसर रहेगा. Next question number 14. In which of the following decisions the Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 19 of the Prevention of Corruption Act but suggested for its restructuring by the Parliament? The case was Manzoor Ali Khan versus Union of India. So B is the answer. Next question number 15. In which of the following decisions the Supreme Court of India has issued 16 guidelines regarding the investigation of any encounter death? It was PUCL versus State of Maharashtra. What is PUCL? People's Union for Civil Liberties. All right. Next is 16. Pursuant to constitutional amendment, cooperative society finds a place among the fundamental right in 19(1)(c). C is the answer. ये कब ऐड किया गया था? 97th अमेंडमेंट एक्ट से. एंड DPSP में कहाँ पर है ये? DPSP में है ये 43B में. एंड आर्टिकल्स कौन से ऐड किए गए हैं? 243ZH से ZT तक और पार्ट बनाया गया है 9B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 371J हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये थी 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2013. और इसमें क्या अमेंड किया गया था? इसमें इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 371J स्पेशल प्रोविजंस फॉर कर्नाटका. Alright. Next question number 18. Under which article of the Constitution, Government of India and Government of State may sue or be sued by the name of Union of India and State respectively? तो ये है Article 300. D is the answer. Next question number 19. The provisions in the Constitution of India relating to DPSP has been adopted from Irish Constitution. B is the answer. Next question number 20. First Law Commission of Independent India was established in year 1955. D is the answer. अभी चल रहा है प्रेजेंट जो चल रहा है कमीशन वो है 21st और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? B.S. चौहान. ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट 21. विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया गेव ए डिसेंटिंग जजमेंट इन रीसेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन? इट वाज जस्टिस J. Chamleshwar. B is the answer. Next 22. The Constitution of India recognizes the international law under Article 51 and 253. A is the answer. Next is 23. The first state in independent India which was created on linguistic basis was Andhra Pradesh. C is the answer. Next is 24. Which law officer holds the right to speak in both the houses of parliament? It is Attorney General of India. So B is the answer. And where the provision for Attorney General, it is mentioned in Article 76. Next is 25. In which of the following decisions the Supreme Court of India has recognized the transgender person to be person of third gender? It is National Legal Service Authority versus Union of India. A is the answer. Next is 26. Who decided the dispute regarding the election of President of India? This Supreme Court mentioned in Article 71 Clause 1. Next is 27. Which of the following judgment relates to prohibition against causing pollution and discomfort to the public due to smoking at public places? It is Murli S. Devra versus Union of India. B is the answer. Next is 28. Through which amendment of the Constitution of India Sikkim was included in the Union of India? It was 36th Amendment. A is the answer. Next is 29. If a person is not a member of either House of Parliament, he cannot be appointed as a minister at the centre for a period of more than 6 months. B is the answer. And where it is provided, it is provided in Article 75 Clause 5.
Next is question number 30. The law declared by Supreme Court of India is binding upon all subordinate courts within the territory of India, but the Supreme Court itself is not bound by its own decisions. The case was Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar. D is the answer. Next is 31. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971 was passed an exception to Section 312 of IPC, risk causing miscarriage. Alright. Next is 32. Acid attack has been made a separate offence in India in year 2013 by Criminal Amendment Act of 2013. D is the answer. Next is 33. The term of office of Chief Election Commission of India is 6 years up to age of 65 years, whichever is earlier. B is the answer. चीफ इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविज़न है वो दिया हुआ है आर्टिकल 324 में. हाउ एवर जो ये चीज़ है, जो टर्म है, जो 6 ईयर और 65 ईयर, ये वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है. ये मेंशन किया गया है इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट में 1991. वहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है, टर्म ऑफ द ऑफिस. So इसका आंसर रहेगा बी. नेक्स्ट इज 34. इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली propounded a right of any unwed mother to obtain birth certificate of a child without disclosing the name of biological father. Answer is ABC versus State of NCT Delhi. A is the answer. Next question number 35. Decision of Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India is famous for declaring Section 66A of Information Technology Act as unconstitutional. C is the answer. Next question number 36. On 16 October 2015, Supreme Court of India declared the National Judicial Appointment Commission to be unconstitutional for violating basic structure of the Constitution. D is the answer. Next is 37. Which one of the following cases was decided by a full bench consisting 13 judges of Supreme Court? Keshavananda Bharati, State of Kerala. D is the answer. Next is 38. Justice retired Dalveer Bhandari is presently a judge in International Court of Justice. At that time, his term was up to 2018, but he was re-elected from 2018 and now he will lead up to 2027 tak. B is the answer. Next is 39. United Nations Human Rights Council is a subsidiary body of General Assembly. C is the answer. Next is 40. In July 2014, Permanent Court of Arbitration resolved the maritime border dispute between India and Bangladesh. C is the answer. Next is 41. Which of the following cases does not relate to de facto recognition of a state? It is SS Lotus case. B is the answer because it is on jurisdiction. Next is 42. Which of the following may request the International Court of Justice to give an advisory opinion? General Assembly or Security Council, both can do. C is the answer. And ये प्रोविजन कहाँ पर मेंशन? ये मेंशन है आर्टिकल 96 ऑफ UN Charter. Alright, C is the answer. Next is 43. To commemorate establishment of UNO in year 1945, United Nations Day is celebrated every year on 24th October. B is the answer. Next is 44. Judges of International Court of Justice are elected for a term of 9 years. A is the answer. And ये कहाँ पर mention है? ये mention किया गया है आर्टिकल 13 of ICJ statute में. A is the answer. Next is 45. The rule of neutrality were codified in year 1856 and 1907. B is the answer. Next is 46. Whom the following was the first Human Rights High Commissioner of United Nations? It was Jose Ayala Lasso. C is the answer. Next is 47. The principle of non-intervention by states has been incorporated in which article of United Nations Charter? It is mentioned in Article 2, Clause 7. A is the answer. Next is 48. The state is admitted to the membership of United Nations by General Assembly after approval from Security Council. B is the answer. And ये कहाँ पर mention किया गया है? ये mention है Article 4 of UN Charter. Next is 49. The Parliament of India passed the Suppression of Unlawful Act Against Safety of Civil Aviation Act 1982 to give effect to this international convention. It was Montreal Convention. D is the answer. Next is question number 50. Judges of the ICJ are elected by General Assembly and Security Council, and it is mentioned in Article 8 of ICJ statute. So friends, यहाँ पर हमने कर लिया है part 1. अब चलते हैं part 2 की ओर. Part 2 have 150 questions of law. 51 starts with IPC.
Question 51. Which of the following provision of IPC is based on principle of de minimis non curate lex? It is 95. D is the answer. मतलब minimum harm shall not cause a litigation. Next is 52. The doctrine of transfer of malice is contained in IPC 301. B is the answer. 299 is culpable homicide. 300 is murder. 304 ये क्या है? Causing death by negligence. Alright, next is 53. A police officer detains a person in lockup despite production of a bail order from the court. The police officer is guilty of wrongful confinement. B is the answer. Wrongful confinement is mentioned in section 340. Abduction कहाँ पर है? 362 में. Wrongful restraint 339 में. Kidnapping is 359, 60 and 61 में. Next is 54. In which of the following offences mens rea is not an essential element? It is bigamy. A is the answer. Next is 55. Which of the following is not an essential element of theft? Dishonest intention, yes. Removal from possession, yes. Immovable property without consent. Immovable property is not a subject matter of theft. So C is the answer. And where is theft mentioned? It is mentioned in section 378 IPC. Next is 56. Kidnapping of a female from lawful guardian can be committed if she is under 18 year of age. B is the answer. कहाँ पर mention है? 359, 360 and 361 में. Next question number 57. When two or more person indulge in fighting at a public place and thereby commit breach of peace, they commit the offence of affray. Mentioned in section 159, punishment in 160. This question is asked in every single exam of Uttarakhand. C is the answer. Next is 58. A makes a false entry in his book for the purpose of using it as corroborative evidence in the court of justice. A is guilty of fabricating false evidence. A is the answer. और ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है section 192 में. Next is 59. A priest who solemnizes an illegal marriage intentionally and thereby facilitates such marriage is liable for abatement by intentional aid. C is the answer. And where is abatement is mentioned in 107. Next is 60. A intentionally pulls up a woman's wheel in order to annoy her. A is guilty of using criminal force. Criminal force is mentioned in section 350. And ये illustration कौन सा है? ये illustration F of 350. C is the answer. Next is 61. Which of the following factors distinguish robbery from dacoity? It is number of offenders. If it is less than 5 तो robbery है, more than 5 है तो dacoity है. Next is 62. Maximum period for which a convicted person may be kept in solitary confinement is 3 months. Mentioned in section 73, 74. Next is question number 63. Revealing the identity of victim of rape is punishable under section. It is 228A. D is the answer. 354D is stalking. 229 is personation of juror or assessor. 376E is repeat offender of rape. D is the answer. Next is 64. Distinguish between similar intention, common intention was clarified in Mehboob Shah versus Emperor. B is the answer. Next is 65. Which of the following cases related to defense of necessity? Dudley versus Stephens, Bishamber versus Rumal, Browning versus State, all of the above. D is the answer. And where is the provision in IPC? Section 81. Next is 66. A instigated B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of abatement to commit murder. B is the answer. और ये है illustration A of section 108. Next is 67. A voluntary throw into river a ring belonging to Z with intention thereby causing wrongful loss to Z. A has committed mischief. B is the answer. और mischief कहाँ पर दिया गया है? 425 में. And ये है illustration C of 425. Next is 68. In which of the following case it has been settled that death sentence should be awarded in the rarest of rarest cases? It was Bachchan Singh versus State of Punjab. C is the answer. Next is 69. Which of the following case the Supreme Court has upheld the constitutional validity of section 377 IPC? It was Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation. D is the answer. Next is 70. Which one of the following is not correctly matched? So bribery at election is mentioned 177B में yes, ठग 310 में है, एफरे 159 में है,
Public nuisance, it is not there, so D is the answer. पब्लिक न्यूसेंस दिया हुआ है 268 में, एंड 267 में क्या है, मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोपाउंडेड ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस. शंकर किशन राव खड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. बी इज द आंसर. तो फ्रेंड्स यहाँ हो गया आईपीसी खत्म. यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट. Question number 72. Which provision of Indian evidence laid down the rule that in certain circumstances admission can be proved by or on behalf of person making it? It is in section 21. 20 में क्या है, admission by person expressly referred to by party to suit. 18 में क्या है, admission by party to proceedings or his agent. 19 में है agreement by person whose position must be proved as against party to suit. Next is 73. Which one of the following is provided under section 133 Indian Evidence Act? It is accomplice, evidence of an accomplice. D is the answer. Dumb witness कहाँ पर है, 119 में. Next is 74. Oral admission as to content of electronic record are provided under section 22A. C is the answer. Next is 75. Court does not include arbitrators. C is the answer, mentioned in section 3 interpretations. Next is 76. Which provision is related to admissibility of electronic records? 65B. D is the answer, asked in 2019. Next is 77. Section 114A is related to presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape. C is the answer, asked in 2018. Next is 78. Under which provision a judge is empowered to ask any question relevant or irrelevant to a witness or party to suit? 165. B is the answer. 166 क्या है, jury. 164 क्या है, using of evidence earlier rejected to produce, earlier denied to produced. Next is 79. Evidence given by witness who is dumb in writing deemed to be oral evidence, mentioned in section 119. C is the answer. Next is 80. The court may permit such question which it regards indecent or scandalous if they relate to fact in issue, they relate to character of the accused does not object, prosecution demands it. तो इसका आंसर रहेगा they relate to fact in issue. ये कहाँ पर मेंशन है? It is mentioned in section 151. Next is 81. Facts of which the court will take judicial notice may be proved, must be proved, need not to be proved. आंसर रहेगा इसका C. कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 58 में. Next is 82. Which one of the following provision of Indian evidence has been amended by Criminal Law Amendment 2013? It was 146. B is the answer. Next is 83. In which section of Indian Evidence Act presumption as to doubt death is provided? 113B. C is the answer, asked in 2018. Next is 84. Match the following. देखिए लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पर मेंशन है? 141 में, हॉस्टाइल विटनेस 154 में, रिफ्रेश मेमोरी 159 में, ओरल एविडेंस 60 में. तो क्या हो गया? 4 1 2 3. A is the answer. Next is 85. When the court has to form an opinion as to electronic signature of any person, opinion of the following person is relevant fact under the act. कौन सा है? Opinion of such person. Opinion of controller appointed under IT Act. Opinion of certifying authority which had issued the electronic signature certificate. C would be the answer. एंड ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ओपिनियन की बात है तो 45 के आसपास ही होगी, बिकॉज 45 इज एक्सपर्ट ओपिनियन. तो 47A. थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं अगर सेक्शन पूछा हो कहीं तो. Next is 86. A question whether A murdered B during the course of struggle, marks on the ground produced by struggle at the place of occurrence is relevant fact under which the following section? Under section 7. Occurrence. 6 में क्या है? Res gestae. 8 में क्या है? PCM, preparation, conduct, motive. 12 क्या है? Suit for damages. इसका आंसर रहेगा B. Next 87. In which the following cases decided by Supreme Court, it was held that CCTV footage is the best evidence. That Tromso Bruno versus State of UP. B is the answer. Next is 88. In which of the following cases Supreme Court observed that if a witness becomes hostile to subvert the judicial process, the court shall not stand as a mute spectator and every effort should be made to bring home the truth. It was State through P.S. Lodhikroni versus Sanjeev Nanda. C is the answer.
Next is 89. In which of the following judgment delivered by Supreme Court in 2015, it was held that it is imperative if examination chief is over, the cross examination should be completed the same day. तो ये केस कौन सा था? विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 90. In which cases the Supreme Court held that any information material that is subsequently discovered with the help of voluntary administered test result can be admitted in accordance with 27. तो ये केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. ए इज द आंसर. Next is 91. Statement of an injured person is recorded as DD. However, if he survives, the statement is admissible under section 157. D is the answer. Next is 92. The draft of Indian Evidence Act was prepared by Sir James Stephen. B is the answer. Next is 93. Which of the following provision of Indian Evidence Act defines the term admission? Is in 17. B is the answer. 18 हमने अभी किया है. Admission by authorized agent. 21 क्या था? Admission by party of proceedings. 16 में क्या है? Existence of course of business when relevant. 21 क्या है? Proof of admission by person making them or by or on their behalf. So friends, यहाँ ख़त्म होता है Indian Evidence Act और स्टार्ट हो गया हिंदू लॉ. क्वेश्चन इज 94. हिंदू मैरिज एक्ट, the provision of divorce by mutual consent was added by amendment of 1976. Next is 95. The degree of probity relation is defined in section 3G में. 3B में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. 3C में क्या है? फुल ब्लड, हाफ ब्लड. 3E में क्या है? prescribed. All right. Next is 96. Registration of marriage has been made compulsory under section 8. 10 में क्या है? Judicial separation. 9 में क्या? RCR. 12 में क्या? Voidable marriages. Next is 97. A child born out of void or voidable marriage under Hindu law is legitimate. Mentioned in section 16. Next is 98. Which of the following is not a ground for divorce under Hindu Marriage Act? Apostasy है, insanity है, venereal disease है, and it is not epilepsy. So D is the answer. And where the grounds are mentioned in section 13. Next is 99. A Hindu male of 28 years adopts a female child of 13 years of age. Adoption is void. Why? Because 21 years का gap होना चाहिए if a male is adopting a female or a female is adopting a male. Next is 100. Section 9 of Hindu Marriage Act was held as intra vires the constitution by Supreme Court in case of Saroj Rani versus Darshan Kumar. A is the answer. Next is 101. The marriage may be declared null and void under section 11 if at time of marriage one of the parties was incapable of giving valid consent of unsound mind within degree of prohibited relationship, and time when party subject to recurrent attacks of insanity was subject to recurrent attacks of insanity. देखिए सेक्शन 11 में तो ग्राउंड्स दिए नहीं हुए, बट वहाँ पर लिखा हुआ है कि इट विल बी वाइड इफ इट फॉल्स अंडर द कंडीशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1, 4 एंड 5. तो 5 का 4 है ये. अनसाउंड माइंड दिया हुआ है क्लॉज 2 के ए में, एंड रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी दिया हुआ है क्लॉज 2 के सी में. तो इसका आंसर क्या रहेगा? पार्टीज आर विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. बी इज द आंसर. Next is 102. Which one of the following cases decided by Supreme Court is related to mental cruelty? Dastane versus Dastane. C is the answer. It is on divorce. Next is 103. Concealment by the respondent of pre-marriage pregnancy by some person other than the petitioner can make the marriage voidable. B is the answer. And voidable marriage का provision कहाँ पर है? Section 12 में. और ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर है? सब section 1 के clause D में. Next is 104. Under section 8. The correct order of priority of succession is reflected in, पहले हमने क्लास 1 फिर क्लास 2 फिर एग्रेट फिर कोगनेट. तो ये हो गया आंसर डी. और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सेक्शन 8 में ही. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 105. The prescribed period of limitation preferring an appeal under section 28 is 90 days. D is the answer. Next is 106. A boy 15 years of age may be validly taken into adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act if custom or usage applicable to parties so permits. B is the answer. ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? मेंशन है सेक्शन 10 के क्लॉज 4 में ऑफ Hindu Adoption and Maintenance Act. B is the answer. Next question number 107. In giving a child in adoption by the Hindu father, the requirement of the consent of mother can be dispensed with if
She has been declared to be unsound mind by the court of competent jurisdiction. She has finally and completely renounced the world. She has ceased to be Hindu. तो all of the above इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया आपके सेक्शन 7 में। अगर हिंदू मदर है लिखा हुआ है वहाँ पर, फीमेल हिंदू लिखा हुआ है, अगर एनी फीमेल हिंदू टेक इन एडॉप्शन, तो उसकी कंडीशंस कहाँ है? फीमेल की हैं सेक्शन 8 में। ऑलराइट, next is 108. A Hindu wife is entitled to claim maintenance after the death of her husband from her father-in-law. And ये कहाँ पर लिखा हुआ है? This is mentioned in section 19 of Hindu Adoption and Maintenance Act. अब section 10 of Hindu Succession Act में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है distribution of property among class 1 heirs. Alright. 24 में हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है? मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी। 25 में क्या है? एलिमनी। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 109. Hindu dies intestate, leaving behind 2 sons, 1 daughter, and widow. His property shall devolve on all of them because all are class 1 heirs. D is the answer. Next is 1010. Which one of the following statement is incorrect? The husband is the natural guardian of Hindu married girl. After the adoption of Hindu minor son, his father continues to remain his natural guardian till he attains majority. Natural guardian of Hindu minor child is father, and after him the mother. But the custody of minor up to age of 5 years shall ordinarily be with the mother. D है natural guardian of an illegitimate Hindu minor boy is the mother and after her the father. तो इसमें गलत क्या है? B। कैसे? देखिए लिखा है ना, आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ हिंदू माइनर सन फादर कंटिन्यूज हिज फादर, मतलब बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहे हैं। व्हेन हिज नेचुरल गार्जियन टिल ही अटेन्स मेजॉरिटी। नो, जो अडॉप्टिव फादर है ही विल बी हिज फादर नाउ, नेचुरल गार्जियन नाउ। ऑलराइट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 111. Hindu Minority and Guardianship Act is not applicable to scheduled tribes and renunciants of UT of Pondicherry. दोनों है, तो आंसर क्या रहेगा? A and C. D is the answer. एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन किया गया इसी एक्ट के सेक्शन 3 में। ये है 2A एंड ये है सब सेक्शन 2। राइट, नेक्स्ट इज 112. प्रिंसिपल लेड डाउन इन द केस ऑफ जीजाबाई विठल राव गजरे वर्सेस पठान खान is related to minority and guardianship. D is the answer. Next is 113. Which one of the following provision of Hindu Marriage Act relates with the ground of divorce exclusively for wife? वाइफ के लिए स्पेसिफिक है, तो ये है सेक्शन 13 के 2 में। आंसर रहेगा डी। 13B में क्या है? डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 13A क्या है? ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। एंड 13(1)A ये ग्राउंड है जहाँ पर RCR की डिग्री हो या फिर जुडिशियल सेपरेशन हो, तो वो अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो वहाँ पर डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। RCR अगर है तो 1 ईयर, जुडिशियल सेपरेशन है तो 1 ईयर। दोनों में अगर 1 साल से ज़्यादा रिज्यूम नहीं होता है कोबिटेशन, तो डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं 1A में। नेक्स्ट इज 114. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास 1 हायर? तो फादर इज नॉट क्लास 1 हायर, ही इज क्लास 2। अब यहाँ स्टार्ट हो गया मुस्लिम लॉ। क्वेश्चन है 115. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? अब देखिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन गलत पूछ लिया है। इजमा और किया जो है ये प्राइमरी सोर्सेज हैं एंड कस्टम एंड जुडिशियल डिसीजंस आर सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसमें ऑप्शन दोनों सी एंड डी ठीक होंगे, क्योंकि पूछा है नॉट अ सेकेंडरी। तो ये इजमा एंड किया तो प्राइमरी हैं, सुन्नत इजमा किया दीज आर प्राइमरी सोर्सेज। Judicial decisions, customs, legislation, there are secondary sources. Okay, so C and D are correct. Next is 116. Essential requirement of Muslim marriage are कबूल only, ijab only, both कबूल and ijab. C is the answer. ijab क्या होता है? Offer मतलब प्रपोजल दे रहे हैं, कबूल मतलब acceptance. Next is 117. During the term of muta marriage, the wife has right to divorce. The husband has right to divorce. Husband and wife both have right to divorce. Neither husband nor the wife has the right to divorce. तो इसका आंसर क्या रहेगा? D. Neither the husband nor the wife has right to divorce. Because muta marriage is for a certain period. इसको कैसे खत्म कर सकते हो आप? हिबाए मुद्दत. Alright. Next question number 118. In Muslim marriage, where the age of the bride is below the age of puberty, but consent of marriage was given by the guardian, the marriage is voidable. This is also provided in Dissolution of Muslim Marriage Act. Ground given to Muslim wife to repudiate the marriage. एंड डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 का ग्राउंड 7 है ये। नेक्स्ट 119. मैरिज बिटवीन 2 पर्सन विद कॉन्जुगिनिटी रिलेशनशिप अंडर मुस्लिम लॉ इज बातिल। कॉन्जुगिनिटी मतलब ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट 120. द मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, इद्दत हैज टू बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ डाइवोर्स बाय हस्बैंड, डेथ ऑफ हस्बैंड, बोथ डाइवोर्स बाय हस्बैंड और एंड डेथ ऑफ हस्बैंड। सी इज द आंसर।
Next is 121. In Muslim law, divorce by lien is a right available to wife only. So A is the answer. Next is 122. Hiba of future property in Muslim law is void. A is the answer. Next is 123. Muslim law, a will may be made of 1/3 of the property. उससे ज़्यादा होगी तो सबकी जितने भी आपके लीगल हायर्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर सकते हैं. बी इज़ द आंसर. नेक्स्ट 124. If donor dies before the acceptance of gift, the gift is void. Next is 125. After divorce, a Muslim woman can validly remarry immediately after divorce. No, after observing iddat period. So B is the answer. Next is 126. Under Muslim law, a married woman who shall be entitled to obtain a decree for resolution of marriage on the ground of whereabouts of husband has not been known for a period of 4 years is provided under section 2 का 1. 2 में क्या है? neglect or failed to maintain for 2 years. 3 में क्या है? convicted for more than 7 years. and 2(4) में क्या है? failed to perform marital obligation for 3 years. इसका आंसर है A. Next 127. A prompt dowry is payable when demanded by wife. B is the answer. Whenever wife demands, prompt dowry shall be paid. Next 128. In a Mubarak divorce under Muslim law, aversion is mutual on the both the sides. C is the answer. Next 129. In Shia Muslim marriage, how many witnesses are compulsory? No witnesses required in Shia. Only Sunni में जो है. This question was asked in 2018. There was asked for Sunni. How many witnesses? Sunni में चाहिए 2 witnesses. Shia में कोई witness नहीं, but Shia में divorce में चाहिए 2 witnesses. C is the answer. Next 130. Executor of a will of Muslim may be Muslim only, Christian only, Hindu only, either Muslim, Hindu, Christian. Can be either Hindu, Muslim or Christian. D is the answer. Next 131. A Muslim can marry any number of wives not exceeding 4. If Muslim marries 5th, such marriage shall be irregular. C is the answer. Next 132. Which one of the following is a right of preemption? Right to seek eviction of tenant and get possession? No. Right to purchase property in preference to the other person? Yes. B is the answer. भाई आप किसी और को बेच रहे हो, पहले मुझे बेचो. That is preferential right and that is preemption. B is the answer. Next 133. In which of the following cases was held that only in case of triple talaq halala is mandatory before remarrying to same husband? Case of Mrs. Sabah Adnan Sami versus Adnan Sami. C is the answer. 134. Under Muslim law, a man is forbidden to have 2 wives at the same time if related with each other by consanguinity, affinity, fosterage, all of these. D is the answer. In some sects, only fosterage is forbidden. Otherwise, consanguinity, affinity is not forbidden. So friends, यहाँ finish होता है Muslim law. Next is TPA. Question number 135. Which one of the following law commission made a draft of TPA? It was drafted by 3rd Law Commission. So C is the answer. Next is 136. Which one of the following is not a immovable property? Surface of land movable है. River on surface land, yes. River immovable है. Standing timber. C is the answer. 3 टेस्ट हुआ थे, all immovable. Standing timber क्या है? आपको काट के ले जा सकते हैं, तो that is movable property. सेक्शन 3 की जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें लिखा हुआ है immovable property में लिखा हुआ है does not include standing timber, growing crops और grass. C is the answer. Next is 137. Section 19 transfer property related to vested interest. A is the answer. Next is 138. Section 10 provides for condition restraining alienation. So C is the answer. Oral transfer कहाँ पर है? Section 9 में. Restriction repugnant to interest created. This is in Section 11. देखिए 9, 10, 11 बहुत ही close options दिए हुए हैं. Next 139. Which one of the following provision of transfer of property provides that person taking the benefit of instrument must also bear the burden? Section 35. A is the answer. And same question was asked in 2018. Doctrine of election. Next 140. Which one of the following case decided by the Privy Council is related to fraudulent transfer? The case was Mushahar Sahu versus Hakim Lal. A is the answer. Next 141. In which of the following cases a lease of immovable property does not determine
बाय फॉरफीचर हो जाएगी, वो सरेंडर हो जाएगी, बाय फ्लेक्स ऑफ टाइम हो जाएगा, बट ऑन सर्विस ऑफ नोटिस टू क्विट नहीं होगा। हमें सिर्फ सर्विस नोटिस दिया ना कि भाई हाँ आप जो है खाली करो, उससे क्या वो डिटरमाइन हो गई, डी इज नो, ए इज द आंसर। और डिटर्मिनेशन ऑफ लीज कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 111 ऑफ टीपीए। नेक्स्ट 142, इन द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्शनेबल क्लेम्स, फ्यूचर डिक्री नो, क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट्स नो, कॉपीराइट ऑफ ए बुक नो, अरियर्स ऑफ रेंट यस। एंड कहाँ पर मेंशन है, इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3 में। नेक्स्ट 143, ए लेट द फॉर्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल इन एन आवर, the lease is void, it is mentioned in section 25 impossible act, condition is void, section 25। and ये है illustration A। next question number 144, which one of the following may be transferred, an easement can transfer no, may right to entry no, right to future maintenance no, assignment or decree for mean profit, C is the answer। ये कहाँ पर मेंशन किया गया, ये किया गया है मेंशन सेक्शन 6 में। ईजमेंट है सेक्शन 6 की क्लॉज सी में, मे राइट टू री एंट्री है क्लॉज बी में, फ्यूचर मेंटेनेंस है डबल डी में, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 145, इन विच प्रोविजन ऑफ टीपीए इट इज प्रोवाइडेड दैट रूल अगेंस्ट परपेचुअल डज नॉट अप्लाई व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, इट इज मेंशन इन सेक्शन 17, सेक्शन 18, बी इज द आंसर। 17 में क्या है, डायरेक्शंस हैं किसके लिए, एक्यूमुलेशन के लिए। 19 में आ गया वेस्टेड इंटरेस्ट, अभी किया है हमने, ठीक है। 20 में क्या है, व्हेन अनबोर्न एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 146, ए ट्रांसफर ए हाउस हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 10,000 विदाउट कंसिडरेशन टू बी, बट द हाउस इज अंडर लायबिलिटी टू पे पब्लिक चार्जेस ऑफ 15,000, ट्रांसफर इज onerous gift, and where is onerous gift is mentioned, it is mentioned in section 127, B is the answer। next 147, under section 104, on whom the power of making rules is conferred, ये है हाई कोर्ट के पास, D is the answer। next question number 148, A owes money to B who transferred that to C, B then demands that from A who not having received money of the transfer as prescribed in section 131 TPA pays B, the payment is valid, C cannot sue A for debt। और ये है सेक्शन 132 में लिखा हुआ, इलस्ट्रेशन है A, ऑलराइट। सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016। नेक्स्ट 149, whom the following person may not redeem the mortgage property, any person having interest in the property, surety for the payment, any creditor of the mortgage, counsel pleading the case against mortgage, तो counsel नहीं कर सकता, D is the answer। Next is 150, marshalling by subsequent purchaser is provided under section 56, B is the answer। 58 में क्या है, mortgage की definitions, provision by court for encumbrances and sale freed thereupon, ये provision by court है। and 55 में क्या है, rights and liabilities of buyer and seller। next is question number 151, every transfer of immovable property made with intent to delay or defeat shall be void, A is the answer। next is 152, for determination of lease from year to year under section 106 Transfer Property Act, the notice period is 6 months, B is the answer। next is 153, A gives 1 lakh rupee to B reserving to himself B's assent the right to take back at pleasure rupees 10,000 out of 1 lakh, the gift is holds goods as to rupees 90,000, it is mentioned in section 126 and ये है illustration B, right। next is 154, doctrine of clog the equity of redemption is a rule of justice, equity in good conscience, this was affirmed by the Supreme Court in Morilal versus Devkaran, B is the answer। next is 155, A let farm to B for life of C, C dies but B continues in possession with A's consent, B's lease is renewed from year to year, B is the answer। next is 156, what is the minimum number of witnesses for presence and signature in relation to attestation of an instrument, at least 2, B is the answer। इंटरप्रिटेशन की जो सेक्शन 3 है वहाँ पर ये दिया हुआ है अटेस्टेड की डेफिनेशन में। नेक्स्ट 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट करेक्टली मैच है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। यूनिवर्सल डोनी 128 है, टोटल पार्ट परफॉर्मेंस 53 A है, मार्शलिंग अभी हमने किया है सब्सिक्वेंट परचेजर, इट इज मेंशन इन सेक्शन 56।
मॉर्टगेज राइट टू फोरक्लोजर 67, यस। तो आंसर क्या रहेगा? सी। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 150 में इसको डिस्कस किया है, वहाँ पर ये पूछा हुआ है और देखिए दोबारा पूछ लिया। अगर आपको एक भी आता है तो आप इसको इजीली 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 2 नंबर बन गए आपके यहाँ पर। तो फिर यहाँ फिनिश हुआ TPA, यहाँ से स्टार्ट हो गया CRPC। Which one of the following case is a landmark case on FIR? It is Lalita Kumari versus State of UP. A is the answer. Next, 159. Under section 216 CRPC, the court may alter charge at any time before judgment is pronounced. C is the answer. Next, 160. Maximum period for which under trial can be detained not more than half of the maximum period of punishment for the said offence. Where it is mentioned 436A. Next, 161. Which of the following is not correct in respect of term victim under section 2WA? अब victim होता कौन है? Who suffers loss, injury, includes guardian as well as legal heirs. तो इसमें wrong क्या हुआ? Does not include guardian but legal heirs. तो C is the answer. Next, 162. A magistrate may take cognizance of an offence upon his own knowledge, receiving complaint, police report, all of the above. D is the answer. और कॉन्वेंस के लिए कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 190 में। नेक्स्ट 163, पावर टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 439 CRPC इज वेस्टेड इन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, बोथ A and B. नेक्स्ट 164, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन CRPC कंपनसेशन इज पेड टू ग्राउंडलेसली अरेस्टेड पर्सन? इट इज प्रोवाइडेड इन 350A. B इज द आंसर। कंपनसेशन कितना है? अप टू ₹1000। 357 में क्या है? कॉम्पनसेशन। 357A में क्या है? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। 360 में क्या है? रिलीज ऑन प्रोबेशन, राइट। नेक्स्ट 165, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैज डायरेक्टेड हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन अंडर 482 स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल? A is the answer. Next is 166, under which provision of CRPC examination of witness in the absence of absconded accused can be done? It is mentioned in section 299. 321 में क्या है? विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। 224 में क्या है? विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन सेवरल चार्जेस। सेवरल चार्ज थे, एक पे मान लीजिए कन्विक्शन हुआ तो बाकी का विड्रॉल हो गया। 301 क्या है? अपीयरेंस बाय PP। A is the answer. Next, 167, which of the following provision of CRPC provides legal aid? Legal aid provided in section 304, again asked in 2018. 309 में क्या है? Expedite trial, this was asked in Haryana 2021. 303 में क्या है? Right to be defended, right to be defended. 302 में क्या है? Permission to conduct prosecution, ठीक है। B is the answer. Next is 168. An order under section 144 shall remain in force for 2 months, yes, but can be extended by the government not exceeding 6 months. और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सब सेक्शन 4 के प्रोवाइजो में। 2 months सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। B is the answer. Next is 169. Section 172 requires statement of witness recorded during the course of investigation under 161 shall be inserted in the case diary. So A is the answer. Next is 170. For every distinct offence of which person is accused, there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately. कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये किया गया है 218 में। 211 में क्या है? कंटेंट ऑफ चार्ज। फिर है 215 में क्या है? इफेक्ट ऑफ एरर्स, अगर कोई एरर हो गया चार्ज में। 220 में क्या है? ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। नेक्स्ट 171, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल ऑल्टर द जजमेंट आफ्टर इट हैज बीन साइंड? इट इज मेंशन इन सेक्शन 362. 360 में क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर। 361 में क्या है? स्पेशल रीजंस लिखने हैं उसके लिए। 462 में क्या है? प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस। प्रोसीडिंग्स अगर रॉन्ग प्लेस में हो गई हैं तो क्या करेंगे? नेक्स्ट 172, प्रोविजन रिगार्डिंग प्ली बार्गेनिंग आर गिवन इन चैप्टर 21A. B इज द आंसर. 19 में क्या है? समरी ट्रायल। 22 में क्या है? अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड। 12A क्या है? कोई चैप्टर नहीं है। B is the answer. Next is 173.
A has committed robbery on a train bound to Varanasi from Haridwar. A can be inquired or tried at any court in the course of that journey. D is the answer. ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 183 में for offence committed during voyage or journey. Next is 174. In the proceedings for confirmation of death sentence, the High Court has power only to confirm the sentence of death or pass any other, only to convict the accused or any other offence, only to acquit the accused person, all of the above. So all of the above. D is the answer mentioned in section 368. Next 175. A wife is not entitled to claim maintenance from her husband under section 125 CRPC if she is living in adultery, refuse to live with husband without sufficient reason, mutual consent, all of the above mentioned in section 125 itself. Subsection है ये 4. Next 176. The direction to ensure that police officers do not arrest accused unnecessarily and magistrate do not authorize detention casually were issued by the Supreme Court in the case of Arnesh Kumar versus State of Bihar. A is the answer. Next 177. Which of the following provision of CRPC provides that the investigation in relation to rape of a child may be completed within 3 months from the date on which the information was recorded by officer in charge of police station. 173 1A. B is the answer. यहाँ से स्टार्ट होता है CPC. क्वेश्चन नंबर 178. Provision relating to precept is provided in CPC under section 46. D is the answer. 40 में क्या है? Transfer of decree to another state. 44A में क्या है? Execution of decree in reciprocating state. 45 में क्या है? Outside India. Execution outside India. ठीक है, इसका आंसर रहेगा D. Next 179. Order 29 of CPC is related to suits by or against corporation. C is the answer. सूट्स बाय गवर्नमेंट कहाँ पर है? 27 में. सूट बाय पॉपर कहाँ पर है? 33 में. नन ऑफ द अबव कहाँ पर है? डी में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CPC प्रोहिबिट्स अरेस्ट ऑफ डिटेंशन ऑफ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ फॉर मनी? सो बी इज द आंसर. सेक्शन 56 प्रोवाइड्स दैट. 55 में क्या है? अरेस्ट एंड डिटेंशन. 59 में क्या है? रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस. 60 में क्या है? अटैचमेंट कब कर सकते हैं, कब कैसे करनी है. नेक्स्ट 181. अंडर प्रोविजन ऑफ CPC हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस. तो दैट इज सेक्शन 24. सी इज द आंसर. 20 में क्या लिखा हुआ है? अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड. और 12 में क्या है? बार टू फर्दर सूट. 15 में क्या है? कोड इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड. कहाँ करेंगे? लोवेस्ट ग्रेड वाला, लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 182. A court may appoint a receiver on any property only before the decree, only after the decree, before or after the decree. C is the answer. Before or after the decree. कभी भी कर सकते हैं. Next 183. Under section 115 CPC, revision may lie to High Court. B is the answer. Next 184. Where a person is a necessary party to a suit is not implicated in the suit, the matter is of non-joinder. Again asked in 2018, 2019. Next 185. Which one of the following combination is mismatched? Mismatched मतलब not correct. Temporary injunction 39 में है. Caveat 148A में. Pseudo proper yes. Power of appellate court 102. No, it is in 107. 102 में क्या है? No second appeal where decree is less than rupees 25,000. All right. Next 186. All orders notices served on or given to any person under the provision of this code shall be in writing. ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 142 में. 144 में क्या है? रेस्टिट्यूशन. 144 में क्या है? मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स. 143 में क्या है? पोस्टेज. नेक्स्ट 187. Which one of the following provision of CPC provides that no appeal shall lie from decree passed by the court with the consent of parties? It is mentioned in 96 subsection 3. C is the answer. 96 के 1 में क्या लिखा हुआ है? अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय कोर्ट एक्सेप्टिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ठीक है. 2 में क्या है? अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी. एक्स पार्टी डिक्री की बात करते हैं. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की अपील की बात करते हैं. 4 में क्या बात करते हैं? नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री ऑफ एनी सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज
where the amount does not exceed 10,000 rupees. मतलब no appeal of decree of court of small causes less than rupees 10,000. Next is 188. Under CPC, what may be substituted for someone where defendant is, in the opinion of court, of a rank entitling him to such mark of consideration? Letter. B is the answer. एंड ये कहाँ पर मेंशन किया गया? मेंशन किया गया ऑर्डर 5 के रूल 30 में. नेक्स्ट 189. The death of a plaintiff or defendant shall not cause a suit to abate if the cause of action survives. A is the answer. Mentioned in order 22 rule 1 earlier asked in 2019. Next question number 190. The principle of constructive res judicata was explained by Honorable Supreme Court in State of UP versus Nawab Hussain. B is the answer. Next 191. Inherent powers may be used by the court for the end of justice to prevent abuse the process of court. A and B both. C is the answer. Next is 192. Which one of the following order is appealable? Order under section 35. 35 में क्या है? Cause. 35A में क्या है? Compensation for false and vexatious claims. B में क्या है? Cost for causing delay. Power to state case for opinion of कोर्ट. तो इसमें कौन सा अपीलेबल है? तो ये फॉल्स एंड वेक्सेशन क्लेम वाला जो है कॉम्पनसेशन, इट कैन बी अपील्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर बट नॉट फॉर द कॉस्ट एंड ओपिनियंस. नेक्स्ट 193. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट? डिस्चार्ज ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन, सेटिस्फैक्शन, अमेंडमेंट. तो अमेंडमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सी इज द आंसर. एंड समटाइम्स इट इज रिटन एज मॉडिफिकेशन ऑफ डिक्री. एंड ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है 47 में, सेक्शन 47. नेक्स्ट 194. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय द कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 51. 51 में क्या है? पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन. कैसे कराना है एग्जीक्यूशन? बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, अटैचमेंट, सेल, इशू ऑफ समन पार्टीज, अपॉइंटिंग ए रिसीवर. तो बाय इशू ऑफ समन टू पार्टी. समझ करने की जरूरत नहीं है, ये हम कर सकते हैं. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 195. अंडर विच प्रोविजन सीपीसी ए कलेक्टर में बी अपॉइंटेड एज रिसीवर? ऑर्डर 40 रूल 5. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 196. अंडर सीपीसी वे डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस एट द टाइम व्हेन सर्विस ऑफ समन इज sought to be effected, service may be made on adult son of the defendant. Service can be made on adult member of the family. It is mentioned in order 5 rule 15 and servant is not a member of the family. It is also mentioned. Next 197. Salary to the extent of first 1000 rupees and 2/3 remainder shall not be liable to attachment or sale in execution of decree other than maintenance. B is the answer because maintenance में क्या ना सिर्फ 1/3 लेफ्ट करके आप सारा अटैच कर सकते हैं. मतलब 2/3 can be attached but in other decrees only 1/3 can be attached. ठीक है ना? शेल नोट पूछा है तो घुमा के पूछा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर. ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री. अब ये क्वेश्चन 193 में जो है पूछा था कि कौन सा नहीं कर सकते डिटरमाइन. यहाँ पूछ लिया कौन सा कर सकते हैं? एग्जीक्यूशन, डिक्री, डिस्चार्ज, सेटिस्फैक्शन. ऑल ऑफ द अबव अगेन मेंशन इन सेक्शन 47. नेक्स्ट 199. प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजेशन ओवर अ प्रॉपर्टी इज मीन प्रॉफिट. सो मेंशन इन सेक्शन 212. Last question is from IPC. And IPC child below age of 7 years is absolutely dolly incapax. A is the answer mentioned in section 82. So friends, यहाँ पर हमने उत्तराखंड जुडिशरी का सिविल जज का प्री का 2015 का पेपर जो है डिस्कस कर लिया है. इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन देयर और एनी मिस्टेक यू कैन फाइंड, or if you want to give any suggestions, advice, you are very welcome. You can just go in comment section and write over there. We always appreciate for that. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आस्क योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल. योर सब्सक्राइब इज़ आवर ओनली मोटिवेशन. आपका कुछ नहीं जाएगा, आप एक क्लिक कर लेंगे. इफ़ यू वांट अ नोटिफिकेशन जस्ट प्रेस द बेल आइकन. इफ यू डोंट वांट द नोटिफिकेशन डोंट प्रेस द बेल आइकन. बट वी रिकमेंड कि आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बिकॉज हमारी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.